Okay. Started the stream. Hello, Qasim Khan. Welcome to the stream. Walaikum assalam. कैसे हो आप? Hopefully you're doing good. So, Walaikum assalam NC. Thank you so much यहाँ आने के लिए फिर से इससे एक बात पता चली कि आप लोगों ने जो बेल आइकन को प्रेस किया है. That's so good. Cool. So today our plan is to read something about Rumi, whom we all admire. Let's see how it goes. मेरा प्लान जो था वो था उर्दू ज़ुबान में, फिर सोचा कि चूंकि वो ट्रांसलेटेड काम है पर्शियन से उर्दू में, सो ऐसी शिकायत आई है कि हमें समझ नहीं आ रहा. आज मैंने क्या किया कि मैंने अंग्रेज़ी ज़बान की ट्रांसलेटेड बुक जो है उसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड किया एंड आई एम लुकिंग इनटू इट. देखते हैं कितना सीखेंगे हम उससे. वालेकुम अस्सलाम महक, वालेकुम अस्सलाम आयशा, वालेकुम अस्सलाम सोनी. होपफुली आप सब ठीक हो, सलामत रहिए आप सब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर. अभी तक मैंने स्ट्रीम का लिंक शेयर नहीं किया. इट मीन्स यू पीपल हैव एक्चुअली प्रेस द बेल आइकॉन. बहुत अच्छी बात है ये भी. अभी जो है मैं स्ट्रीम का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट अबाउट रूमी. देखते हैं आज what we will learn, what I will learn and what you will learn from this stream. चूँकि कल आपने रिक्वेस्ट की थी, आप सब लोगों ने वोट किया था इन फैक्ट रूमी सीरीज पे, तो चलो अगेन लेट्स स्टार्ट विद रूमी. सो मैं थोड़ा बीच में पॉजेस लेके थोड़ा सा समझाऊंगा, जितना मैं समझ पाऊंगा उस हिसाब से मैं आपको भी समझाना चाहूंगा अकॉर्डिंगली. अदरवाइज अगर मैं पढ़ता रहूंगा और फिर शिकायत आती है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. ओके. वालेकुम अस्सलाम सारिम, कैसे हो आप? ठीक. वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर साहब. थैंक यू सो मच महक. ओके. ओके, मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दी है. ठीक है, अभी इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद रूमी. ठंड लग रही है, चलिए ये भी ठीक है. सो जिंदगी जबरे मुसलसल है. सारिम वांट्स अटेंशन. वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब, कैसे हो आप? होपफुली यू आर डूइंग गुड. सो कैन यू एक्चुअली पिन, कोई मुझे बता सकता है कि लिसनर्स अभी कितने हैं? I think I forgot about the stream. Is this? Can anyone actually tell me how many listeners are there? प्लीज पिन कर दीजिए अपनी कमेंट, बता दीजिए कितने लिसनर्स हैं ताकि हम शुरू कर सकें. तो सोचा मैंने ऐसा है कि ओके वी हैव 4 लिसनर्स. कूल, काफ़ी हैं, मोर देन इनफ. सोचा यूं कि शुरू से शुरू करते हैं.
ठीक है ना? कि we have a new listener here, Arifa Shafi. Welcome to the stream. I don't know ये लोग जाते कहाँ? सलाम करके निकल जाते हैं क्या? सलाम तो मुझे लगता है आई थिंक आई गेस अराउंड 7 people came here to greet me. Then they left. अच्छी बात है ये भी। जैसे मैंने देखा कि I saw Qasim coming here, that's one. NC is still here, that's two. Mehak, three. Sony Farooq, चार. Sarim, पांच. Mudassir Saab, छः. Then Aftab came in, that is seven for you. And चार listeners, क्या करने आते हो यहाँ? सलाम करके निकल जाते हो? Okay. जी अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप ठीक हो। हेलो ख्याल भी आपका इंशाल्लाह ठीक ही होगा। आइनैन इज हियर। ओके, आइनैन जो है पिछले 2-3 स्ट्रीम से आ रही है यहाँ पे अ, सुनने के लिए। आरिफा शफी जो है ये एक नया नाम उभरा है, अभी तक हमने ये देखा नहीं। सो वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके, सो आप ओके, हियर इज आमिर सुहेल, वेलकम टू द स्ट्रीम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हो आप? ठीक? ये जी को सिर्फ रोना होता है, यहाँ पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह इसको सिर्फ रोना होता है। ओके, इजो, सो शैल वी स्टार्ट? मुझे बता दीजिए, मैं फिर शुरू करूंगा अकॉर्डिंगली। आज सोचा था एक वीडियो प्रिपेयर करूं एक गजल का, लेकिन एक कर भी दिया था, लेकिन फिर पोस्ट नहीं किया क्योंकि टू बी फ्रैंक एंड टू बी ट्रू टू यू पीपल, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ मैंने एक्चुअली सी द एनालिटिक्स ऑफ एनी वीडियो, अजीब सा लगता है फिर। अरे क्यों नहीं, आपका नाम, आप दिल में बसे हो। सो वी हैव समवन लाइक डी हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डी, वेलकम टू द स्ट्रीम। आई डोंट नो हु यू आर बट वेलकम टू द स्ट्रीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड समथिंग अबाउट रूमी। जैसा मैंने कहा कि मुझे शिकायत आई कि आप जब उर्दू में रूमी सीरीज पढ़ रहे हो हमें बहुत कुछ समझ नहीं आता। सो आई शिफ्टेड टू इंग्लिश वर्जन ऑफ रूमी। तो इसमें कुछ पोएम्स है, देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा रुक रुक के इसको पढ़ूंगा और इसको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की। आई थिंक वी शुड स्टार्ट, इट्स ऑलरेडी 9 minutes। ओके, राइजिंग स्टार इज हियर। हेलो राइजिंग स्टार, होपफुली यू आर डूइंग गुड। सो इस तरह एक दो दिनों से नहीं आई है यहाँ पे। वन लिसनर इज मिसिंग। ओके, शिवांग भी कल से एब्सेंट है, शिवांग नहीं आए हैं कल से। ओके, जी सिंह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता फिर भी सुनती हूँ। जरा नवाजी आपकी, आप हमें सुनते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कलाम लिखने वाले से बड़ा कलाम पढ़ने वाला होता है, और कलाम पढ़ने वाले से बड़ा कलाम सुनने वाला होता है। आप सुनती हो, ये तो माशाल्लाह, चार चांद लग गए। ओके, सो वी हैव आई गेस अराउंड 9 listeners। क्या हम शुरू करें? गिव मी 100 इफ यू वांट मी टू स्टार्ट, बिकॉज कितना ही हम वेट करेंगे, 11 बजे तो मैंने रोज कहा है। उसके बाद नींद भी आ जाती है कुछ लोगों को, यहाँ पे सो जाते हैं। ओके, जी इज सेइंग वी शुड स्टार्ट। ओके, ओके, राइजिंग स्टार इज सेइंग वी शुड स्टार्ट। So we have around 9 listeners only.
Okay. Mudassir is saying we should start. Okay. Sarim is saying we should start. Okay, we should start. I am going to start. So, जैसे कि ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप शिफ्ट कीजिए फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश बिकॉज उर्दू ज़बान हमें रास नहीं आती. कोई बात नहीं, अब अंग्रेजी ही पढ़ेंगे. सो आई थॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं रूमी के बारे में. Persians and Afghanis call Rumi Jalaluddin Balkhi. He was born on September 30th, 1207, in Balkh, Afghanistan, which was then part of Persian Empire. The name Rumi comes from Roman Anatolia. He was not known by that name, of course, until after his family, fleeing the threat of the invading Mongol armies, emigrated to Konya, Turkey, sometime between 1215 and 1220. His father, Bahauddin Walid, was a theologian and a jurist, and a mystic of uncertain lineage. ये थोड़ा मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि हमने तो समझ ही लिए, तो बहुत कॉमन इंग्लिश है कि पर्शियन यानी कि जो फारस के लोग यानी कि ईरानियंस, ठीक है ना, दोज हु स्पोक पर्शियन. और अफगानी, रूमी को जलालुद्दीन बल्खी कहते हैं. कब पैदा हुए थे? 1207 ईस्वी, September 30th, बल्ख अफगानिस्तान में, जो कि पर्शियन एम्पायर का पार्ट था उस टाइम. रूमी को ये रोमन एनाटोलिया वगैरह इस नाम से नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे रूमी माना जाता है, वहां पे जलालुद्दीन बल्कि, इतना ही काफी है, ठीक है. फिर जाके इनकी फैमिली जो है चली गई वहां से. इन्होंने इमाइग्रेट किया कहाँ की ओर? टर्की की ओर, 1215 1220 ईस्वी में वगैरह. ये तो बहुत कॉमन सी बात है. लेकिन ये जो सत्र मैंने पढ़ी, ये जो मैंने लाइन पढ़ी, हिज फादर Bahauddin Wald was a theologian, a jurist, and a mystic of uncertain lineage. इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, जरा सा समझाऊंगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं. थियोलॉजियन, एवरीवन नोज. थियो जब भी याद आ जाए, जब भी आप पढ़ोगे, लॉजी स्टडी होती है, किसी की भी स्टडी, ठीक है. एंड थियो इज रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है. थियो इज रिलेटेड टू रिलीजन, एनी काइंड ऑफ रिलीजन. जैसे थियोक्रेसी है, ठीक है. अगर एक निज़ाम, सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उसको हम थियोक्रेसी कहते हैं. लाइकवाइज अगर आप रिलीजन पढ़ रहे हो तो उसको हम थियोलॉजी कहते हैं. जो रिलीजन पढ़ेगा उसको हम थियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है. क्लियर. इसी के बाद इनके जो वालिद साहब थे वो जूरिस्ट भी थे. ये भी सबको पता होगी, जो भी जुडिशरी के रिलेटेड, जिस कानून के रिलेटेड फील्ड में कोई भी एक्सपर्ट होगा उसको हम जूरिस्ट कहते हैं, ठीक है. क्लियर. इसके बाद और एक लाइन है, मिस्टिक ऑफ अनसर्टन लीनिएज. मिस्टिक इज समवन रिलेटेड टर्म टू सूफीज्म, ठीक है. अब अनसर्टन लीनिएज क्या होता है? जिसका पता नहीं आ रहा है ये एक्चुअली है कहां से आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मिस्टिसिज्म. जैसे कि इनके यहाँ, सूफियों के यहाँ, देयर इज सोहरावर्दी, देयर इज चिश्ती, देयर इज देयर आर लीनिएज, सर्टेन लीनिएज, कि सपोजिटली ये लोग कहते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ दिस नॉलेज है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है. देयर इज कुबरवी, देयर इज कादरी, देयर इज चिश्ती. ये एक लीनिएज होती है, मिस्टिक लीनिएज. शिजराइन नस्ब इसको कहते हैं हम. तो ये कहां से आ रहा है? वी डोंट नो. अबाउट द रूमीज फर्दर वी डोंट नो. ये इनका जो मिस्टिक लीनिएज है ये कहां से आ रहा है. सो इट्स अनसर्टन, बी इट चिश्ती, बी इट सोहरावर्दी, बी इट एनी अदर lineage, ठीक है. वी आर अनसर्टन अबाउट इट. द हिस्टोरियंस आर अनसर्टन अबाउट द lineage. ये हो गया इनके वालिद के बारे में, जो कि थियोलॉजियन थे, जूरिस्ट थे और एक मिस्टिक थे, ठीक है. बहाउद्दीन वल्स मारिफ
मारिफ एक बुक है, कलेक्शन ऑफ द नोट्स, डेयरी लाइक remarks, sermons, khitab जिसमें होते हैं. A strange account of visionary experiences has shocked most of the conventional scholars who have tried to understand them. यानी कि जो रूमी के वालिद साहब थे, जिनका नाम बहाउद्दीन वल्द है, इनका जो एक काम है, ठीक है, कंपाइल किया गया काम जिसका नाम मारिफ है, इसमें कुछ नोट्स लिखे गए हैं जो इन्होंने अपने कलम से लिखे हैं, कलमबंद किए हैं कुछ नोट्स. इसमें जो इनकी जिंदगी के कुछ अकाउंट्स थे, यानी कि विजनरी एक्सपीरियंस, जो जो कुछ उन्होंने देखा हुआ है अपनी आंखों से, वो कुछ लिखा गया है, ठीक है. और कुछ सरमन्स है, यानी कि खिताब, रिलीजियस खिताब होते हैं ये, रिलीजियस लेक्चर्स इन शॉर्ट. तो these things have actually shocked most of the conventional scholars who have tried to understand them. उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब what it is about. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. He shows a startlingly sensual freedom in stating his union with God. Rumi was instructed in his father's secret in a life of a former student of his father, Bahranuddin Muhakkik Burhan, and Rumi also studied Sanai and Atar. At his father's death, Rumi took over the position of Sheikh in the Darwish learning community in Konya. ये तो आसान था. His life seems to have been a fairly normal one of a religious scholar, teaching, meditating, helping the poor, until in the late fall of 1244 when he met a stranger who puts a question to him. तो यहां तक तो बिल्कुल समझ वाजिह तौर पर कह रहा है लिखने वाला कि बिल्कुल जो ही इनके वालिद साहब की डेथ हुई, ही टुक ओवर द रोल ऑफ हिज फादर, जिनका काम क्या था, ही वाज अ शेख इन हिज एरिया, ठीक है. और इनका काम क्या था, काम यही शेख का काम क्या होता है, सर्मन्स, फ्राइडेज, प्रेयर्स, लीडिंग द प्रेयर वगैरह वगैरह. तो वो काम इन्होंने ले लिया, ये रिलीजियस स्कॉलर बन गए, टीचिंग इनका काम रहा, मेडिटेटिंग इनका काम रहा, हेल्पिंग द पुअर इनका काम रहा, अनटिल कब तक, ये तो आसान था ना, इसमें कोई वजाहत की जरूरत नहीं है. अनटिल कब तक, इन द लेट फॉल ऑफ 1244 व्हेन ही मेट अ स्ट्रेंजर हु पुट अ क्वेश्चन टू हिम, जिसने इनसे एक सवाल पूछा. दैट स्ट्रेंजर वाज द वंडरिंग दरवेश शमस ऑफ तबरेज, जिसको लोग शमस तबरेजी भी कहते हैं, यानी कि तबरेज का रहने वाला जिनका नाम शमस था. Who had traveled throughout the Middle East searching and praying for someone who could endure my company. A voice came, what will you give in return? My head. The one you seek is Jalaluddin of Konya. The question Shamas spoke made the learned professor faint to the ground. जो ही शमस ऑफ तबरेज इन्होंने सवाल पूछा जलालुद्दीन रूमी से, तो रूमी जो है ही फेंट अवे, ये चक्कर खा के गिर गए. We cannot be entirely certain of the question, but according to the most reliable accounts of Shamas, according to the reliable account, Shamas asked who was greater, Muhammad or Bistami. For Bistami had said, how great is my glory, whereas Muhammad had acknowledged in his prayer to God, we do not know you as we should. Rumi heard the depth out of which the question came and fell to the ground. He was finally able to answer that Muhammad was greater because Bistami had taken one gulp of the divine and stopped there, whereas Muhammad, the way was always unfolding. थोड़ा समझाऊंगा यहाँ कि शमस ने क्या पूछा, बड़ा कौन है, मोहम्मद या बिस्तामी. वजाहत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बिस्तामी जो है वो कहते हैं हाउ ग्रेट इज माई ग्लोरी, एंड मोहम्मद ने क्या कहा, वी डू नॉट नो यू एज वी शुड, यानी कि गॉड के और मुखातिब होके कहते हैं कि डू वी हैव लिसनर्स हियर, ओके वी हैव, मैं सोच रहा था मैं अकेले पढ़ रहा हूँ. सो गॉड की ओर मुखातिब होके कह रहे हैं कि बिस्तामी और मोहम्मद में डिफरेंस क्या थी. मोहम्मद सेड दैट वी डू नॉट नो यू एज वी शुड,
यानी कि हम आपको जान ही नहीं पा रहे हैं जैसे जैसे हमें जानना चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है नहीं आपको जानना। बट बिस्तामी ने क्या कहा है? हाउ ग्रेट इज माई ग्लोरी। रूमी heard the depth of which the question came and fell to the ground. He was finally able to answer that Muhammad was greater. क्यों? Because Bistami had taken one gulp of the divine. उसने सिर्फ एक प्याला पिया था, कहां से? डिवाइन मीन्स ऊपर वाला, ठीक है, एंड स्टॉप देयर। उसने एक 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 किरण देखी थी ऊपर वाले की। तो हाँ, बिस्तामी कौन था, मोहम्मद कौन था, ये सब चीजों की वजाहत मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। आई वोंट एक्सप्लेन दीज थिंग्स। वो मैं लेटर ऑन कहूंगा कि ये सब कैरेक्टर्स जो हैं, जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कैसे आए, कब आए। फिलहाल हम कंटिन्यू रखते हैं। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि मोहम्मद ने क्या कहा? हम जान ही नहीं सकते, ये वो है, ये वो डोरी है जिसका कोई सिरा ही नहीं है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, ये, ठीक है ना। लेकिन बिस्तामी सेड गॉड इज समथिंग विच वी कैन नो, और उसने एक किरण देख ली गॉड की एंड सेड ओके दिस इज गॉड, डन, आई एम डन हियर। He was finally able to answer that Muhammad was greater because Bastami had taken one gulp of the divine and stopped there. मैं ज्यादा philosophical नहीं बन रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं सिंपल 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 ऊपर ऊपर से कह रहा हूं। Whereas Muhammad, the way was always unfolding. Muhammad said it's always unfolding. It's like an onion जिसको आप peel off कर रहे हो, और वहां से और रिकवरिंग और रिकवरिंग और रिकवरिंग निकल रही है। It never ends. It never ends. आज आप कहोगे गॉड इज दिस, उसकी इतनी फिनिट क्वालिटीज है, इतनी क्वालिटीज, वो क्वालिटीज, ये क्वालिटीज, कल मिटाओगे, फिर से नया नक्श बनाओगे गॉड का। गॉड इज इन्फिनिट। सो रूमी सेड मोहम्मद वाज ग्रेटर। देयर आर वेरियस versions of this encounter. But whatever the facts, Shamas and Rumi became inseparable. So ये क्या कह रहा है यहाँ पे ऑथर, कि इस encounter के, when Shamas met Rumi, the encounter has been quoted by several historians with different contexts altogether. But the fact remains, when this union of these two persons happened, Shamas and Rumi became inseparable, no matter what the incident was. ठीक है ना? There are versions, there are various versions of this encounter, but whatever the facts are, Shamas and Rumi became inseparable. ठीक है? Their friendship is one of the mysteries. They spent months together without any human needs, transported into a region of pure conversation. This ascetic connection caused difficulties in the religious community. Rumi's students felt neglected. Sensing the trouble, Shamas disappeared as suddenly as he had appeared. Shamu, a scholar immersed for 40 years in the work of the Rumi, thinks that it was at his first disappearance that the works of Rumi began that transformation into a mystical artist. देखिए, थोड़ा सा समझाता हूँ। अली हैदर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऑथर अगेन इज सेइंग दिस कि वट एवर द एनकाउंटर वॉज, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरीके से इस एनकाउंटर को कहा है। किसी ने कहा है कि, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, किसी हिस्टोरियन ने ये लिखा है कि रूमी वॉज स्टिंग नियर अ वेल, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, शमस केम देयर, शमस तबरेजी वहां आ गए, ठीक है, और रूमी कुछ किताबें पढ़ रहे थे। ये एक हिस्टोरियन का मैं कह रहा हूं। रूमी कुछ किताबें पढ़ रहे थे और किताबें कंपाइल्ड वहीं पे रखी थी। शमस केम एंड थ्रू देम इनटू द वेल। कूल, ठीक है यहां तक। एंड रूमी सेड टू शमस, तुम फकीर जैसे हो, तुम आए, तुमने किताबें कहां फेंक दी? वेल में। ये किताबें थी, तुम्हें समझ में है किताबें क्या चीज होती हैं?
ये रूमी ने शमस को कहा, तुम्हें खबर भी है किताबें क्या शय होती हैं, तुम क्या जानो, तुम तो इग्नोरेंट हो, तुम तो इलिटरेट हो, तुमने कैसे ये जुर्रत कर दी, तुमने ये किताबें क्यों फेंकी वहां पे? टू दिस शमस सेज ई किताब नीस्त चीज दीगर अस्त। शमस तबरेजी इनको कहते हैं कि भाई साहब ये किताबें नहीं है, क्योंकि कुछ और शाय है, तुम क्या पढ़ रहे थे? मूविंग ऑन फर्दर, रूमी ने इनको वापस में ये जवाब कहा कि मसला क्या है, व्हाट हैपेंड एंड ऑल, मुझे ये किताबें वापस चाहिए, गई तो कुएं में थी, कुएं से कौन चढ़ाएगा? एक 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 हिस्टोरियन ये लिखता है कि कुएं में गई थी, दूसरा हिस्टोरियन लिखता लिखता है दरिया में गई थी। शमस ने अपना हाथ बढ़ाया और वो सारी किताबें जो हैं वापस लाई, एंड रूमी फेल बिफोर हिम। ठीक है, रूमी फेल बिफोर हिम। तो ये एक एनकाउंटर है, इस तरह एक हिस्टोरियन इस तरह बयान करता है, दूसरा हिस्टोरियन दूसरी ओर बयान करता है, तीसरा हिस्टोरियन ये कह रहा है कि उसने उसको दो सवाल पूछे, दो तीन सवाल पूछे, तो रूमी फिएंटेड, रूमी जो है चक्कर खा के गिर गए। तो हम अब ऑथर ये लिख रहा है, वी डोंट हैव टू गो बाय एनकाउंटर्स, we don't have to go by the versions, we have to go by this thing only, that Shamas and Rumi became inseparable after this event। इतना हमें जानने की कोशिश करनी है, क्यों बने इस पे फोकस करो, ऐसा ऐसा क्या हुआ था उनके बीच में, लेट दैट बी, मगर द जर्नी ऑफ दिस थिंग बिटवीन रूमी एंड शमस, इसमें जो हमें सीख मिल रही है वो ले लो। ठीक है, तो जैसे इसमें फिर इसमें फिर इनकी इनकी फ्रेंडशिप का जिक्र कर रहे हैं ये, और इनके कन्वर्जेशंस के बारे में कह रहे हैं। फिर एक एक स्कॉलर है जिनका नाम एनिमारी शिमुल है, जिन्होंने 40 साल तक रूमी पे काम किया, फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स जिन्होंने रूमी पे काम किया। वो कहते हैं कि जो शमस की गैर मौजूदगी थी, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि रूमी के जो स्टूडेंट्स थे उनको लगा कि वी आर गेटिंग नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ शमस, शमस केम इन बिटवीन बिटवीन रूमी एंड द स्टूडेंट्स, क्योंकि रूमी क्या थे, ही वाज अ स्कॉलर, ही वाज अ रिलीजियस स्कॉलर, अ ग्रेट स्कॉलर, वन ऑफ इट्स काइंड, सो ही केम इन बिटवीन रूमी एंड हिज स्टूडेंट्स, सो students felt like neglected, and Shamas actually censored this trouble. Then he got away. So Shimal is saying this disappearance of Shamas, ये जो गैर मौजूदगी, ये जो चले गए, आंखों से ओझल हो गए शमस, यही एक वजह बनी किसके लिए, इसके लिए कि a scholar immersed for 40 years in the works of the Rumi thinks that it was at this first disappearance that Rumi began the transformation into a mystical artist। अभी तक ये religious scholar थे, अब ये mystical artist बने। वो क्या करते थे? He turned into a poet, वो शायर बन गए। He began to listen to music and he used to sing, he used to whirling around को कहते हैं रक्स करना, hour and after and hour and hour and hour। ये किस वजह से हुआ? जब शमस से वो जुदा हो गए, शमस ऑफ तब्रीज। ओके, ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके बाद हम काम पढ़ेंगे। Word came that Shamas was in Damascus. Rumi sent his son, Sultan Walid, to Syria to bring his friend back to Konya. When Rumi and Shamas met for the second time, they fell to each other's feet so that no one knew who was lover and who the beloved। कितना खूबसूरत लम्हा है। When Rumi and Shamas met for the second time, they fell at each other's feet so that no one knew who was lover and who the beloved। Shamas stayed in Rumi's home and was married to a young girl who had been brought up in the family। Again, the long mystical conversation began, जिसको कहते हैं हम सोहबत। इसको फारसी लफज है इसके लिए सोहबत, सोहबत में बैठना। क्योंकि एक कपलेट है रूमी का, यक जमाने सोहबत बा अवलिया बेहतर सद साल तात बेरिया।
Rumi says that if you stay in the companionship of one who is on the straight path, it is equivalent to having been practicing your religion for 10 years. मतलब ऐसे मैं जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ, एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। 7 साल जहाँ पे कहा है वहां पे 10 years का जिक्र है। चलिए मैं आगे जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। When Rumi and Shamas met for the second time, they fell at each other's feet, so that no one knew who was lover and who the beloved. Shamas stayed in Rumi's house and married to a young girl who had been brought up in the family. Again, the long mystical conversation, sohbat began, and again the jealousies grew, जिससे पहले हुई थी students में. On the night of December 5th, 1248, as Rumi and Shamas were talking, Shamas was called to the back door. He went out, never to be seen again. Most likely, he was murdered with the connivance of Rumi's son, Aladdin. If so, Shamas indeed gave his head for the privilege of mystical friendship. The mystery of the friend's absence covered Rumi's world. He himself went out searching Shamas and journeyed again to Damascus. It was there that he realized. देखिए ये सुनिएगा अच्छे से जितने भी अभी listeners हैं. It was there that he realized. कि क्या कहते हैं? एक फारसी कोट है, इसको मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ. Why should I seek? Why should I seek? I am the same as he. His essence speaks through me. I have been looking for myself. Why should I seek for myself? The union became complete. There was full fana, annihilation in friend. Shamas was writing the poems through Rumi. Understand this. Shamas is nowhere there, but Rumi के through वो काम लिख रहे हैं. Why so? Why so? Why so? Because Rumi is saying, now you have become my hands, my eyes, my ears, जिनसे मैं सुनता हूँ, मेरी आंखें जिनसे मैं देखता हूँ, मेरे हाथ जिनसे मैं लिखता हूँ. So you are in me. I am not looking for you now. I am you. समझ रहे हो आप जितने भी listeners हैं? This is so beautiful. सुनते सुनते जाइएगा. Union became complete. There was full fun. इसके बाद हम story, not story. इसके बाद हम काम शुरू करने जा रहे हैं जो रूमी ने लिखा है इसके बाद. There was full fun. Annihilation of the friend. Shamas was writing the poems. Rumi called the huge collection of his odes and quatrains. इसने क्या नाम दिया उनका? जो इसने quatrains, कथा. Quatrain यानी कि 4 लाइन्स पे मुश्तमिल काम. And odes, poems. ठीक है? इस काम का नाम क्या लिखा गया? The works of Shamas of Tabriz. ठीक है? After Shamas' death and Rumi's merging with him, another companion was found, Salahuddin Zarkab, the goldsmith. Salahuddin became friend to whom Rumi addressed his poems, not so fairly as to Shamas, but with quiet tenderness. When Salahuddin died, Hussam Chalebi, Rumi's scribe and favorite student, assumed the role. Rumi claimed the Hussam was the source, the one who understood the vast secret order of the Masnavi, the great work that shifts so fantastically from theory to folklore to jokes to ascetic poetry. For the last 12 years of his life, Rumi dictated the 6 volumes of his masterwork to Hussam. He died on December 17th, 1273. अब जाके काम शुरू होगा रूमी का. यहां तक आप बस रूमी का थोड़ा सा जान रहे थे. रूमी क्या था, शम्स तबरेज़ी कैसे आया, कैसे उनका मिलाप हुआ, कैसे उन्होंने कन्वर्सेशंस की, सोहबत क्या चीज होती है एंड ऑल. थोड़ा बहुत ये ज्यादा ज्यादा फिलोसॉफिकल है, इसमें ज्यादा जोर देना नहीं है, बस इतना समझना है ऊपर ऊपर से इनकी स्टोरी क्या थी. ठीक है. इसके बाद काम शुरू. पहला काम, द टैवर्न. टैवर्न क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है जिसमें फर्मेंटेशन होती है, शराब बनाई जाती है, अल्कोहल. लेकिन अब वो सब है नहीं. ठीक है. आप इसका जो है लिटरल मीनिंग की ओर नहीं जाइएगा, कुछ और समझ के. वो मैं थोड़ा थोड़ा खुद करके आपको समझा देता. टैवर्न, पहले काम का हेडिंग. Whoever brought me here will have to take me home.
In the tavern are many wines, the wine of delight in color and form and taste, the wine of the intellect's agility, the fine port of stories, and the cabinet of soul singing. Being human means entering this place where entrancing varieties of desires are served. The grape skin of ego breaks and a pouring begins. बात समझ रहे हो आप? बात क्या हो रही है? For how does fermentation happen? Fermentation होती कैसे है basically? आप अंगूर लाओ, अंगूर को आप पका दो, बिल्कुल एनारोबिक यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। होता क्या है बेसिकली, जब तक अंगूर नरम ना हो जाए, जब तक अंगूर पूरा पिस न जाए, तब तक शराब तैयार नहीं होती। अकॉर्डिंगली इस टैवर्न में जब हम खुद को नजर कर देते हैं तो होता क्या है, बीइंग ह्यूमन मीन्स एंटरिंग दिस प्लेस where entrancing variety of desires are served, the grape skin of ego breaks and a pouring begins. Fermentation is one of the oldest symbols of human transformation. यानी कि अपना ईगो, ईगो यानी अना, अना यानी हम अपना नफ्स जो है, जब हम इस टैवर्न में, इस भट्टी में अपने आप को नजर कर देते हैं, तो पहली चीज जो हमें फर्मेंट करनी होती है वो है ईगो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वेन एवर यू गो फॉर कोचिंग, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूं। आप फुटबॉल कोचिंग के लिए जा रहे हो, आप क्या करते हो वहां पे? व्हाट डू यू डू? यू लिसन टू द कोच। वो आपको कहता है ये डाइट आपको फॉलो करना है, आप फॉलो करते हो। वो कहता है इतनी स्प्रिंट लेनी है, आप स्प्रिंट लेते हो। वो कहता है आपको जॉगिंग करनी है, आप जॉगिंग करते हो। कहता है आपको ड्रिबलिंग करनी है, आप ड्रिबलिंग करते हो। आपको ये करना, आपको, सो यू लिसन टू द कोच। या आप कोच को यही से कहते हो, हाँ आई वोंट डू दिस, आई डू दिस, आई डू दैट, आई डू दिस, आई डू, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। दैट मीन्स बिफोर एंटरिंग इनटू द टैवर्न, कोच के पास जाने से पहले और जाने के बाद, द डिफरेंस इज, आपकी अना जो है, आपका ईगो जो है, वो गिर गया होता है। ठीक है? When grapes combine their juice and are closed up together for a time in a dark place, the results are spectacular. This is what lets two drinks meet so that they don't know who is who. बात समझ आ रही है? बात ये है, when there is union between two entities, two things, union should be as such according to fermentation. वहां समझ नहीं आना चाहिए आप कहाँ गए, आप ऐसे गुल मिल गए उस शख्सियत के साथ, अब समझ नहीं आ रहा है आप कौन हो। आप पर्सन ए थे या पर्सन बी, हु इज हुम, यू डोंट गेट टू नो। दिस इज व्हाट Rumi is saying here, as per what I am thinking, and as per my understanding. So इसके बाद, the results are spectacular. This is what lets two drinks meet so that they don't know who is who. Pronouns are no longer apply in the tavern's mud world of excited confusion and half articulated vauntings. But after some time in the tavern, a point comes, a memory of elsewhere, a longing for the source, and the drunks must send off from the tavern and begin the return. So एक वक्त ऐसा आ जाता है फिर, these two drunks जो जो मिल गई ना, ये कहते हैं we should return to our source जहां से हम आए हैं। ठीक है? The Quran says we are all returning. The tavern is a kind of glorious hell that human beings enjoy and suffer and then push off from in the search of the truth. The tavern is a dangerous region
where sometimes disguises are necessary, but never hide your heart. Rumi urges, keep open there. A breaking apart, a cry out in the street begins in the tavern, and the human soul turns to find its way home. It's 4 a.m. Nasruddin leaves the tavern and walks the town aimlessly. A policeman stops him. Why are you here wandering out in the streets in the middle of the night? Sir, replies Nasruddin. If I knew the answer to the question, I would have been home hours ago. Now starts the poem. Who says words with my mouth? First poem. All day I think about it. Then at night I see it. Where did I come from? What am I supposed to be doing? I have no idea. My soul is from somewhere else. I am sure of that. And I intend to end up there. This drunkenness began in some other tavern. When I get back around to that place, I'll be completely sober. Meanwhile, I'm like a bird from another continent sting in this aviary. The day is coming when I fly off. But who is it now in my ear who hears my voice? Who says words with my mouth? Who looks out with my eyes? What is the soul? I cannot stop asking. If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drunks. I did not come here of my own accord, and I can't leave that way. Whoever brought me here will have to take me home. This poetry, this poetry, this poetry, I never know what I am going to say. I don't plan it. When I'm outside of the saying of it, I get very quiet and rarely speak at all. Have a huge barrel of wine, but no cups. That's fine with us. Every morning we glow, and in the evening we glow again. They say there's no future for us. They are right, which is fine with us. There is a community of the spirit. Join it and feel the delight of walking in the noisy street and being the noise. Drink all your passion and be a disgrace. Close both eyes and see with the other eyes. Open your hands if you want to be held. There is a community of the spirit. Join it and feel the delight of walking in a noisy street and being the noise. Drink all your passion and be a disgrace. Close both eyes to see with the other eye. Open your hands if you want to be held. Sit down in this circle. Quit acting like a wolf and feel the shepherd's love filling you. At night, your blood wanders. Don't accept consolations. Close your mouth against food. Taste the lover's mouth in yours. You moan, she left. He left me. She left me. You moan, she left me. He left me. 20 more will come. Be empty of worrying. Think of who created thought. Be empty of worrying. Think of who created thought. Why do you stay in prison when the door is so wide open? Move outside the tangle of fear thinking. Live in silence. Flow down in always widening rings of being. There's a strange frenzy in my head of birds flying, each particle circulating on its own. Is the one I love everywhere? Drunks fear the police, but police are drunk too. People in this town love them both like different chess pieces. Listen to the poet of Sanai, who lived secluded
Don't wander out on the road in your ecstasy, sleep in the tavern. When a drunk strays out to the street, children make fun of him. He falls down in the mud. He takes any and every road the children follow, not knowing the taste of wine or how his drunkenness feels. All people on the planet are children except for a very few. No one is grown except those free of desire. God said, the world is a play, a children's game, and you are the children. God speaks the truth. If you haven't left the child's play, how can you be an adult without the purity of spirit? If you are still in the middle of the lust and the greed and other wantings, you are like children playing at sexual intercourse. They wrestle and rub together, but it's not sex. The same with the firings of mankind. It's a scrabble with play swords, no purpose, totally futile. Like kids on hobby horses, soldiers claim to be riding Burak, Muhammad's night horse, or Duldul, his mule. Your actions mean nothing. The war you do, you're holding part of your pants and prancing around. Don't wait till you die to see this. Recognize that your imagination and the thinking and your sense perception are reed canes, and children cut and pretend are horses. The knowing of mystic lovers is different. The empirical, the sensory, the sciences are like a donkey. The knowing of mystic lovers is different. The empirical, the sensory, the sciences are like a donkey loaded with books, or like the makeup, woman's makeup. It washes off. But if you lift the baggage rightly, it will give you joy. Don't carry your knowledge load for some selfish reason. Deny your desires and willfulness, and a real mount may appear under you. Don't be satisfied with the name of who with just words about it. Experience that breathing. From books and words come fantasy, and sometimes from fantasy comes union. On inner and outer, no moon, no ground or sky. Don't hand me another glass of wine. Pour it in my mouth. I have lost the way to my mouth. The wine we really drink is our own blood. Our bodies ferment in these barrels. We give everything for a glass of this. We give our minds for a sip. God has given us a dark wine so potent that drinking it we leave the two worlds. God has put in the form of hashish a power to deliver the taster from self consciousness. God has made sleep so that it erases every thought. God made Majnu love Leela so that so much. Just her dog would cause confusion in Majnu. There are thousands of minds that can take over our minds. Don't think all ecstasies are same. Jesus was lost in his love for God. His donkey was drunk with barley. Drink from the presence of saints, not from those other jars. Every object, every being is a jar full of delight. Be a connoisseur and taste with caution. Any wine will get you high. Judge like a king and choose the purest. And the ones unadulterated with fear are some urgency what's needed. Drink the wine that moves you as a camel moves when it's untied and is just ambling about. Notice how each particle moves. Notice how everyone has just arrived here from a journey. Notice how each wants a different food. Notice how the stars vanish as the sun comes up. Notice how all the streams stream towards the ocean. Look at the chefs preparing special plates for everyone according to what they need. Look at this cup that can hold the ocean. Look at those who see the face. Look through Shamas's eyes into the water that is entirely jewels. Last year I admired wines. This I am wandering inside the red world. Last year I gazed at the fire. This year I am the burnt kebab. Thirst drove me down to the water where I drank the moon's reflection. Now I am a lion, staring up totally lost in love with the thing itself.
Don't ask questions about longing. Look in my face, soul drunk, body ruined. These two sit helpless in a wrecked wagon. Neither knows how to fix it. And my heart, I would say it was more like a donkey sunk in a middle mud hole, struggling and miring deeper. But listen to me for one moment, quite being sad. Here, blessings dropping their blossoms around you, God. It's the old rule. The drunks have to argue and get into fights. The lover is just as bad. He falls into a hole. But down in that hole, he finds something shining, worth more than any amount of money or power. Last night, the moon came dropping its clods in the street. I took it as a sign to start singing. Falling up into the bowl of sky, the ball breaks. Everywhere is falling, everywhere. Nothing else to do. Here's the new rule: break the wine glass and fall toward the glass blower's breath. This dad is tormented and very tired, tortured with restraints like a madman. This heart, still you keep breaking the shell to get the taste of its kernel. Bewilderment. ये दूसरी poem है. Bewilderment. First of all, the author actually gives a long description of the poem. At the verge of full fana, annihilation in God, there seems to be a region of sweet confusion, the sense of being in many places at once, saying multiple sentences, a hazy melting, fragile, and nearly blank, profound ignorance within which conventional calm behavior seems insane. फिर से पढ़ने जा रहा हूँ. At the verge of full fana, annihilation in God, there seems to be a region of sweet confusion, the sense of being in many places at once, saying multiple sentences, hazy of melting, fragile, and nearly blank, profound ignorance within which conventional calm behavior seems insane. Rumi's poems are well trimmed, Persian miniature gardens. They are more like, as scholar Schimmel says, the paintings in the Turkoman style, full of abrupt movement, odd flowers and bush, demons and talking animals. Poem start हो रही है. I have five things to say, Rumi says. I have five things to say. So first of all, पहले मैं इससे पहले ये इंटरप्ट कर रहा हूँ कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगा सबसे. Do you want me to explain the poem that I actually read before it, or should we continue with the flow? प्लीज जल्दी बता दीजिए चैट बॉक्स में, और ये भी बता दीजिए कैसा लग गया. How you felt after listening to Rumi. सो गए हो सब, या मैं अपने साथ पढ़ रहा हूँ? कुछ तो लिख दो चैट बॉक्स में. आई थिंक मैं अपने साथ पढ़ रहा था अभी तक. ओके. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यही पे हो. गुड. यू शुड एक्सप्लेन द पॉइंट टू ऑल द पीपल. ओके कूल. एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अभी कितना टाइम आया है? ये पोएम पढ़ के टुमारो वी शैल एक्सप्लेन द पोएम्स. ठीक है, जितनी भी मैंने पढ़ी ना, कंपाइलेशन ऑफ द पोएम्स, कल मैं वो समझा दूंगा. ये थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद वी शैल. ठीक है. ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं है, पोएम्स भी समझाएंगे इंशाल्लाह. सो ये पोएम है, आई हैव फाइव थिंग्स टू सी. The vacant lover speaks directly to the cloud. You're the sky my spirit circles in. The love inside love, the resurrection place. Let this window be your ear. I have lost consciousness many times with longing for your listening silence and your life quickening smile. You give attention to the smallest matters, my suspicious doubts, and to the greatest. You know my coins are counterfeit, but you accept them anyway, my impudence and my pretending. I have five things to say, five fingers to give into your grace. First, when I was apart from you, this world, this world, when I was apart from you, this world did not exist, nor any other.
Second, whatever whatever I was looking for was always you. Third, why did I ever learn to count three? Fourth, my cornfield is burning. Fifth, this finger stands for Rabia, and this is for someone else. Is there a difference? Are these words or tears? Is weeping speech? What shall I do, my love? So he speaks, and everyone around begins to cry with him, laughing crazily, moaning in the spreading union of lover and beloved. This is the true religion. All others are thrown away, bandaged beside it. This is the Sema of slavery and mastery dancing together. This is not being. Neither words nor any natural fact can express this. I know these dancers day and night. I sing their songs in this phenomenal cage. My soul, do not try to answer now. Find a friend and hide. But what can stay hidden? Lover's secret is always lifting its head out from under covers. Here I am. Here are the miracle signs you want, that you cry through the night and get up at dawn asking that in the absence of what you ask for your day gets dark, your neck thin as a spindle, that what you give away is all you own, that you sacrifice your belongings, sleep, health, your head, that you often sit down in a fire like a lows wooden and often go out to meet a blade like a battered helmet. When act of helplessness becomes habitual, those are the signs. But you run back and forth, listening for unusual events, peering into the faces of travelers. Why are you looking at me like a madman? I have lost a friend. Please forgive me. Searching like that does not feel. There will come a rider who holds you close. You faint and give up. The uninitiated say, he is faking. How could they know? Water washes over bleached fish. The water of these signs I just mentioned. Excuse my wondering. How can one be orderly with this? It's like counting leaves in the garden. Along with the song, notes of partridges and crows. Sometimes organizations and computation become absurd. Of these 2000, I and we people, which am I? Don't try to keep me asking, listen, when I am this out of control, but don't put anything breakable in my way. There is an urinal inside me. What's here is a mirror for that, for you. If you're joyful, I am. If you grieve, or if you're bitter, or graceful, I take on qualities like the shadow of cypress tree in the meadow. Like the shadow of a rose, I live close to the rose. If I separated myself from you, I would turn entirely thorn. Every second, I drink another cup of my own blood wine. Every instant, I break an empty cup against your door. I reach out, wanting you to tear me open. Generosity of you lights a candle in my chest. Who am I then? His empty, begging bowl. Laid by myself in the boat of myself, laid by myself in the boat of myself, no light and no land anywhere, cloud cover thick. I try to stay just above the surface, yet I am already under and living within the ocean. Does sunset sometimes look like the sun's coming up? Do you know what a faithful love is like? You're crying. You say you have burned yourself, but can you think of anyone who's not hazy with smoke?
Be melting snow, totally conscious and apropos of nothing. You come to see me. Is someone here? I ask. The moon, the full moon inside your house. My friends and I go running out in the street. I am in here, comes a voice from the house. But we aren't listening. We are looking up at the sky. My pet night angel sobs like a trunk in the garden. Ringdoves scatter with small cries. Where? It's midnight. The whole neighborhood is up and out in the street thinking the cat burglar has come up. The actual thief is there too, saying out loud, yes, the cat burglar is somewhere in the crowd. No one pays attention. Lo, I am with you always means when you think, when you look for God. God is in the look of our eyes, in the thought of looking nearer to you than you yourself are, or things that have happened to you. There's no need to go outside. Be melting snow. Be melting snow. Wash yourself off yourself. A white flower grows in the quietness. Let her tongue become the flower. Fragile way. I need a mouth as wide as the sky to say the nature of a true person, language as large as longing. Fragile well. Inside me often breaks. No wonder I go mad and disappear for 3 days every month with the moon. For anyone in love with you, it's always these invincible days. I have always lost the thread of the story I was telling. My elephant roams his dreams of Hindustan again. Narrative poetics destroyed my body, dissolving a return. Friend, I have shrunk to a hair trying to say your story. Would you tell mine? I have made up so many love stories. Now I feel like fictional. Tell me. The truth is, you're speaking not for me. I am Sinai and you're Moses walking there. This poetry is an echo of what you say. A piece of land can't speak or know anything, or if it can, only within limits. The body is a device to calculate the astronomy of the spirit. Look through that astrolabe and become an ocean. Why this distracted talk? It's not my fault I rave. You did this. Do you approve of my love madness? Say yes. What language will you say it in? Arabic or Persian? Or what? Once again, I must be tied up. Bring the curly ropes of your hair. Now I remember the story. A true man stares at his old shoes and sheepskin jacket. Every day he goes up to his attic to look at his work shoes and worn out coat. This is his wisdom, to remember the original clay and not to get drunk with ego and arrogance. To visit the shoes and the jacket is praise. The absolute works with nothing. The workshops, the materials are what does not exist. Try and be a sheet of paper with nothing on it. Try and be a sheet of paper with nothing on it, with absolutely nothing on it. Be a spot of ground where nothing is growing, where something might be planted, a seed, possibly from the absolute. Where are we? An invincible bird flies over. An invisible bird flies over but casts a quick shadow. What is the body? The shadow of your love that somehow contains the entire universe. A man sleeps heavily, though something blazes in him like the sun, like a magnificent fringe swaying up under them. He turns under the cars. Any image is a lie. A clear red stone tastes sweet. You kiss a beautiful mouth, and a key turns in the lock of your fear. A spoken sentence sharpens to a fine age. A mother doe looks for her nest, asking where coo, where the lion lies down, where any man or woman goes to cry, where the sick go, where they hope to get well,
where a wind lifts that helps with winnowing, and the same moment sends a ship on its way, where anyone says only God is real. Yahoo! Fear beyond fear. A bright viewer's shuttle flashes back and forth, east and west. Where are we? Maku, Maku, like the sun, saying where are we, as it waves with the asking. The friend comes into my body, looking into the center, unable to find it, draws a blade and strikes anywhere. There's a light seed grain inside. You fill it with yourself, and it dies. I am caught in this curling energy. Your hair, whoever's calm and sensible is insane. Do you think I know what I'm doing? That for one breath or half breath I belong to myself as much as a pen knows what it is writing or the ball can guess where it's going? So that's the second poem. और इन दोनों का मैं कल 17/17 आपको आने बता दूंगा. आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. मेरा भी सर फटा जा रहा है. सो प्लीज टेल मी, ठीक है रूमी पढ़ना, या आप लोगों को तहजीब पापी पसंद है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हम इस स्ट्रीम को एंड करेंगे इसके बाद. सो गए क्या सब? आज एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है? ओके. सारिम इज सेइंग इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू. मुदस्सिर सिंह, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो ये और खूबसूरत हो जाएगा जब हम कल इसको डिस्कस करेंगे ना. आज मैंने इसलिए इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लिया ताकि आपको एक आइडिया मिले रूमी है क्या. रूमी के छोटे छोटे कोट्स पढ़ के यू विल नेवर गेट टू नो व्हाट रूमी इज. टू नो रूमी यू हैव टू नो शमस तबरेजी. टू नो शमस तबरेजी यू नीड टू गो थ्रू मिस्टिकल वर्ल्ड. थोड़ा 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 करके हम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा. जैसे सी यहाँ पे there's a popular meme. The meme is please do not quote me for your girlfriend. I have written these poetic lines for God. ठीक है. This is what Rumi says to young buds. So इसीलिए छोटा छोटा कोट करके रूमी को ना पढ़िएगा. रूमी को पढ़ना है तो रूमी की किताबें उठाइए, मसनवी, मौलाना रूमी की. तो एक 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 कोट है यहाँ पे, वो कहूँगा मैं ऐसे, मुझे जल्दी जल्दी याद आ रहा है कि मसनवी मौलवी मानवी, मसनवी मौलवी मानवी, हस्ते कुरान दर जबान पहलवी. मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है इस टाइम. तो इसका मतलब ये है कि मसनवी मौलवी मानवी, यानी कि जो मौलाना रूमी की मसनवी है वो क्या है? हस्त कुरान दर जबान पहलवी. पहलवी जो है लैंग्वेज है अफगानिस्तानियों की, तो उस जुबान में कुरान है जैसे. ठीक है. तो जो मसनवी है दैट इज एक्चुअली द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान. हाँ बिल्कुल, मेरी जो लेफ्ट आई में ना बड़ी दर्द हो रही है यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है. सो आई थिंक वी शुड एंड दिस स्ट्रीम. सो बता दीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया जो, अरे मैं कल लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, बस आज मैंने स्टार्ट करना था अंग्रेजी जबान में ऐसे. अदरवाइज आई हैव दिस बुक आल्सो हियर, जिसमें मैं उर्दू में पढ़ रहा था किससे, लेकिन लोगों को जो है मसले हो गए इसके साथ, क्योंकि इसमें ये ट्रांसलेटेड है ना, तो ये समझ नहीं आती है. पर्शियन से ये उर्दू में ट्रांसलेट की गई. अब अली हैदर भाई, क्या बात है? व्हाट हैपेंड बता दीजिए. यस जॉन, टेक केयर. ओके. हाँ, क्या बात है, क्या बात है? आपने मुंह क्यों बना लिया? सो ये था जॉन. ये था रूमी बाय जॉनिज्म. सो आप बता दीजिए, इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू कल से, मतलब मैं माने भी समझाऊंगा,
एक-एक करके मैंने समझाऊँगा आप लोगों को। बट इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू ओनली, देन आई विल कंटिन्यू। अदरवाइज़ इफ यू आर थिंकिंग कि ये ठीक नहीं है, बिकॉज़ मैं यहाँ आता ही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ना आए तो मैं किसको सुनाऊँ? ठीक है ना? थैंक यू सारिम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बता दीजिए जितने भी यहाँ पे हैं। ठीक है, सारिम ठीक है, ओके, ओके। कूल, कूल। और कुछ यहाँ पे कोई है? बाकी सब कहाँ गए? सो गए? मुझे लगता है रूमी को पढ़ के आप लोगों को नींद आ गई है। ओके, कंटिन्यू। आईनैन इज़ सेइंग कंटिन्यू। हाँ, कल से बिल्कुल मैं बिल्कुल माने समझा दूँगा इसका। बस आज मैंने ऐसे जल्दी-जल्दी पढ़ लिया कि ताकि आप थोड़ा-सा बहुत आपको आइडिया मिले। ये जो कोट्स मतलब निकाल रहे हैं ना सारे के सारे पेज, कोट्स निकाल रहे हैं, छोटे-छोटे कोट्स निकाल रहे हैं, ये कहाँ से निकाल रहे हैं? तो ये गूगल से निकाल रहे हैं। मगर ये निकले कहाँ से? ये किताबों से निकले हैं, ठीक है? तो फिर आप देखते हो गूगल गूगल बाबा से देखते हो, यू आर यूनिवर्स योरसेल्फ, डू नॉट लुक हियर। तो उसके लिए यू हैव टू रीड रूमी प्रॉपर्ली। हम थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे रूमी क्या कहता है ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, खुदा के बारे में, दोस्त के बारे में, ठीक है? कंटिन्यू रीडिंग रूमी इन इंग्लिश एंड देन ट्रांसलेट इट लेटर। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। करेंगे, करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं कहना चाहूँगा आप सबसे गुज़ारिश है एंड पे, जिसको भी रूमी पसंद हो, जिस आपको लगता हो कि इन जनाब को रूमी पसंद है और इनने अभी तक रूमी पढ़ा नहीं है, जैसे मेरे खुद के एक दोस्त है, वो बहुत इस चीज़ के ना कायल हैं कि उनको मैं रूमी समझाऊँ, मगर वक़्त नहीं मिलता है, ना उसे ना मुझे। तो मैंने उसको कह दिया है ये स्ट्रीम जॉइन करने के लिए जब भी हम रूमी पढ़े, तो वो आता है कभी-कभी। तो इसी तरह अगर आपके दोस्त है, अक़रबीन है आपके, उनसे कह दीजिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इसको मैं समझाऊँगा धीरे-धीरे करके, ऐसे नहीं हम चलेंगे आगे। जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं समझाऊँगा, कोई मसला नहीं। आफ़ताब कोई मसला नहीं, इसको मैं समझाऊँगा, आराम से धीरे-धीरे करके समझाऊँगा। इसको ऐसे अचानक से मैंने मैंने आज आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना था रूमी का, वो मैंने दे दिया। पोएम्स को मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आप लोगों को ये थोड़ा-सा ज़हन में फिट इन हो कि हम आगे जाके क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना? एंड पे मैं आई थिंक वी शुड एंड इट विद पोएट्री। हाँ, बिल्कुल। एंड हम पोएट्री से ही करेंगे, क्योंकि मैं खुद पोएट्री से ही आया हूँ। अब पोएट्री को इग्नोर करूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये पढ़ते हैं आज। गुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता। गुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता। वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती हैं लहू से। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती लहू से। और ज़ख्म जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। वो राहते जाँ है, मगर इस दरबदरी में ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता। हम दोहरी अज़ियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी हैं शाल, शौक़ सफ़र नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है,
दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। आई थिंक ओके, 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 डन। अली हदबाय, ओके, ओके, टेक केयर एवरीवन। आई थिंक वी शुड एंड इट। एक एक गजल जॉन साहब की, तो उसके बाद विल एंड इट, क्योंकि जॉन को ना पढ़े तो ख्वाब में आ जाते हैं वो। सच्ची कह रहा हूँ, ख्वाब में आ जाते हैं वो। जॉन की गजल पढ़ के विल एंड इट, 2 मिनट दूंगा उस गजल को, कोई सी ठीक ठीक गजल डाल के। ये जब जिनको जॉन इंडिया के बारे में पता होगी, जब जॉन साहब जो है एक रिटर्न करके आए थे पाकिस्तान से, अमरोहा वापस इंडिया, तो आई थिंक अराउंड 80s में, शायद 80s में, हाँ। तो उन्होंने फिर ये लिखा था, तो ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए पढ़ लेते हैं इसको, तो विल एंड द स्ट्रीम। हम आदियों के बन में किसी कारवां के थे, हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे। तो मैं इससे पहले ये कहना चाहूंगा, 1957 में ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, देन ही रिटर्न बैक, ऐसी नजर मारने के लिए, अमरोहा यूपी, ठीक है। वहां से, वहां पे उन्होंने फिर ये लिख दिया था। बहुत मोहब्बत थी जॉन को अमरोहा यूपी से। हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। ऐ जाने दास्तां तुझे आया कभी ख्याल, ऐ जाने दास्तां तुझे आया कभी ख्याल, वो लोग क्या हुए जो तेरी दास्तां के थे। हम आदियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। ऐ जाने दास्तां तुझे आया कभी ख्याल, वो लोग क्या हुए जो तेरी दास्तां के थे। हम तेरे आस्तां पे ये कहने को आए हैं, हम तेरे आस्तां पे ये कहने को आए हैं, वो खाक हो गए जो तेरी आस्तां के थे। हम तेरे आस्तां पे ये कहने को आए हैं, वो खाक हो गए जो तेरे आस्तां के थे। मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे। मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे। आप पूछते हो नामो निशान मुसाफिरां, क्या पूछते हो नामो निशान मुसाफिरां, हिंदुस्तान में आए हैं हिंदुस्तान के थे। अब खाक उड़ रही है यहाँ इंतजार की, अब खाक उड़ रही है यहाँ इंतजार की। ए दिल ये बामुदर किसी जाने जहां के थे, अब खाक उड़ रही है यहाँ इंतजार की। ए दिल ये बामुदर किसी जाने जहां के थे। हम किसी को दें बला दरो दीवार का हिसाब, ये हम जो है जमी के न थे आसमां के थे। हमसे छीना है
ना प्याला तेरा मियाँ, गोया अज़ल से हम सफेद तशनगां के थे। हमको हकीकतन हमको हकीकतों ने किया है खराब व ख्वार। हम ख्वाबे ख्वाब और गुमाने गुमा के थे। सद याद याद सद याद याद जान वो हंगामे दिल की, जब हम एक गाम के न थे पर हफ्त खां के थे। वो रिश्ताए ज़ात जो बर्बाद हो गए, मेरे गुमा के थे कि तुम्हारे गुमा के थे। मेरे गुमा के थे कि तुम्हारे गुमा के थे। थैंक यू। टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के थे। टेक केयर, टेक केयर। ये अमरोहा बहुत बहुत मोहब्बत करते थे, अमरोहा से, इतना याद रख लीजिएगा। टेक केयर। गुड नाइट।